yes, you can see, but don't turn off it. लास्ट इंग्लिश का मतलब क्या है? हमारा मैसेज सामने वाले के पास इंग्लिश में चला जाए, उनको मंजन करने की जरूरत ना पड़े, उनको मंजन चाहिए। टूथपेस्ट अगर कह दिया हमने तो आवर मैसेज इज कन्वे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। You all must have heard about marathon, but welcome to Jokathon. It's Jokathon means you are going to tell your jokes here, where the laughter is the language. And we have the fantastic lineup of our fantastic budding comedians here, who will come here and show their wit and fun to us. So let's dive into this activity filled with laughter and humor. Can we start it? Yes, sir. Okay. So laughter is universal, and today we are celebrating it in English. Our participants have crafted their own jokes, and we can't wait to hear it. And without further ado, let's invite our participants who will share their jokes one by one to us. And we are going to start with Soumya Vaishya. Let's clap for her. English को हिंदी मान चलना है. Yes, sir. Everybody has to do it because you all have good English. That's why you are here. So how you have to tell the joke? You have to feel the English. You have to feel that you are saying it. जैसे आपका हिंदी में क्या जोक था and English में क्या होने वाला है? Yes, sir. है ना? So when she says, a child asks mom, "Mom, can I watch the TV?" Then you have to feel कि आपका ये वाला पार्ट हिंदी का हो गया है ना? कि क्या मैं टीवी देख सकता हूँ? हिंदी भी साथ में सोचते चलो। अब कौन सा पार्ट बचा है? मॉम क्या बोलेगी हिंदी में? देखो, यस, हाँ तुम देख सकते हो, लेकिन बस इसको ऑन मत करना। तो यस 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 यू कैन वॉच इट, बट जस्ट डोंट टर्न इट ऑन। ठीक है। Hello everyone, here a joke about mom and his child. So start. Child says his mom, "Mom, do I watch the TV while studying?" Mom says his child, "Yes, yes, you can see, but don't turn off it." लास्ट वर्ड, चलो इस बार कर लेंगे, डन हो जाएगा। Yes, sir. Don't turn on. डोंट Turn it on. डोंट टर्न ऑन भी कह दो चलेगा। Yes, sir. Good morning, everyone. Here a joke about mom and his child. Child says his mom, "Mom, do I watch the TV?" Child say, mom replies. 10 नंबर का है, देखो 10 नंबर का जोक है आपका। आई एम गोइंग टू मेक इट। 5 मार्क्स हैं धीरे धीरे जोक सुनाने के। जो धीरे धीरे जोक सुना उसको 5 नंबर पहले ही मिल जाएंगे। और 5 मार्क्स में क्या है, जोक में क्या है, एक्सप्रेशन कितना देते हो एंड ऑल दैट। बट 5 मार्क्स किस चीज के हैं? यू गो स्लो, पैदल जाते हो। अगर साइकिल पे भी चढ़ गए ना तो 1 नंबर कट जाएगा, और बाइक पे चढ़े 2 नंबर कटेगा, है ना? और कार पे चढ़े 3 नंबर कटेगा, और ट्रेन पे चढ़े तो 4 से 5 नंबर कट जाएंगे। सर नहीं, ट्रेन पे 4 नंबर आएगा। हाँ, एरोप्लेन में 5 नंबर, ठीक है ना? इस बार हो जाएगा। तो यस, लेट्स गो। Hello everyone, here a joke about mom and his child. So let's start. Child says his mom, "Mom, do I watch the TV while studying?" Mom says, "Yes, yes, you can watch, but don't turn off." It Don't was turn on. going pretty well. I must say, अभी तक का बेस्ट चल रहा था, तो इसको बेस्ट बना। Hello everyone, here a joke about mom and his child. So let's start. Child says his mom, "Mom, do I watch the TV while studying?" Mom says his child, "Yes, yes, you can watch, but don't turn on." Next we have in the queue is Pranav. Let's invite Pranav on the stage and he will say his joke. Please come. You have such a long name, I cannot pronounce your name. I like your short name. Come here, then. I see a cow who's shaking its tail. Then there I go. Then there go. Near. Then I go near. So near. पास जाता हूँ या close. Then I go close to it या near to it. चलो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं हिंदी में एक बार बोल दूंगा, जिससे कि जो इंग्लिश में समझ पाए वो हिंदी में समझते। चलो ठीक है। I see a cow who's shaking its tail. Then go there. I see my sister Jaya is combing his hair. अरे Let me translate it. तो इन्होंने एक गाय देखी
लेकिन उससे जब पास गए तो इन्होंने देखा कि इनकी सिस्टर जो जया है अपने बाल संवार रही थी. नेक्स्ट इज जानवी हु विल टेल हर जोक. Good morning, everyone. Let's hear joke. Let's hear. Let's hear joke. Good morning, everyone. Let's hear a joke. Indian don't. Sir, they say he tha. So simply they smile or they laugh and say what was the need of it. क्या they say he what was the need of it. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन. इस वक्त रुको, तभी पैदल करो. गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स हियर अ जोक. चलो एक जोक सुनते हैं. इंडियंस डोंट थैंक फॉर एनी गिफ्ट, दे जस्ट से ही एंड से व्हाट वाज द नीड ऑफ इट. व्हाट वाज द नीड ऑफ इट. Good morning, everyone. Let's hear a joke. Good morning, everyone. Let's hear a joke. Indian don't thank for gift. They say he. What was the need for it? बढ़िया, good. It was good and I would just like to translate it in Hindi. तो जो ऑफ इट फॉर इट है, परफेक्ट ग्रामर होने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप ग्रामर 50% में से रखते हो या 30% में से रखते हो, आई एम टोटली ओके विद इट. आवर पर्पज हियर शुड बी टू कन्वे आवर मैसेज. अगर आपका जोक जो भी है, आपका जो चुटकुला है, अगर ऑडियंस समझ गए तो आपने अपना काम कर लिया. अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो आपको कैसे इंग्लिश को दिखाना होगा कि आपका काम कैसे हो जाएगा. आप किसी शॉप पे गए, यू आर एबल टू कन्वे योर मैसेज. सपोज यू वांट अ टूथपेस्ट, so you say this way, है ना, or toothpaste. You don't need to say I need a toothpaste, because if your English is fine or not very fine, you cannot say the sentence. Then how would you say toothpaste? Toothpaste. He will understand. Our purpose initially is just to convey our message. स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है? हमारा मैसेज सामने वाले के पास इंग्लिश में चला जाए, उनको मंजन कहने की जरूरत ना पड़े. उनको मंजन चाहिए. टूथपेस्ट अगर कह दिया हमने तो आवर मैसेज इज कन्वे. गेटिंग इट? स्पोकन इंग्लिश 0 से शुरू करो. अब वो तो लेवल बढ़ता जाएगा, यू विल अपग्रेड योर लेवल, लेकिन स्टार्टिंग ऐसे ही होगी. ठीक है कि भारतीय जो लोग हैं वो उपहारों के लिए धन्यवाद नहीं देते हैं, वो थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं क्या जरूरत थी इसकी. इतना ही बोलते थे. ओके, गुड. नेक्स्ट लाइन इज प्रितेश पांडे हु विल कम हियर एंड टेल अ जोक टू अस. Hello everyone, good morning. My name is Pritesh Pandey. Let's hear the joke. If child labor the crying, then why teachers given the homework? Yes, very good. That is a legitimate question that he is asking. अगर बाल मजदूरी अपराध है तो जो टीचर्स हैं होमवर्क क्यों देते हैं? ये तो अपराध है ना. Yes sir. So you have a point. Good, Pritesh. That was nice. Next in line we have from the girls Arya Srivastav. She will come here and tell a joke. Hello everyone. I have a joke for you. The cold is increasing so much that if some says hi, we hear chai. Thank you. Very good. तो क्या कहना चाहती हैं आर्या कि ठंड इतनी बढ़ रही है, अगर कोई हाय कहता तुमको क्या सुनाई पड़ता है? चाय. Everybody did really well. Now give me 2 minutes, actually just 1 minute to conclude who is the winner of today's activity. Meanwhile you can share your jokes, thoughts, stories among you, and in the audience as well. If someone has some story or joke to share, they can come out after 1 minute and they can share their joke as well. So we have concluded the activity. Now we are going to talk about how well you have performed and what are your marks. And starting with Pranav. Pranav, who came here and did actually good, and the first time only, Pranav gets 7 marks. Clap for Pranav. Then Janvi came and she gets 6 marks.
Janvi. Pritesh. He came and delivered well, and Pritesh gets 8 marks. Then Arya came and delivered as well. 8 marks to Arya. So our winners for today are class 4th students, Pritesh and Arya. Please come forward. They are the winners and you did well in this activity. Let's clap for them once again. Good job.